हेलो एवरीवन, मेरे साथ सीए फाउंडेशन का आप जो पेपर डिस्कस करेंगे वो है पेपर 3। पेपर 3 इज क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। This section is divided into 3 parts. Business mathematics, logical reasoning, and business statistics. बिजनेस मैथमेटिक्स जो आपका आएगा दैट इज ऑफ 40 मार्क्स। लॉजिकल रीजनिंग एक न्यूली एडेड सेक्शन है जो फाउंडेशन से ही एड ऑन हुआ है। दिस इज ऑफ 20 मार्क्स एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स अगेन 40 मार्क्स। दिस पेपर इज कंप्लीटली MCQ बेस्ड। No disruptive questions there. .25 का नेगेटिव मार्किंग आपका रहेगा। नोट करते रहेंगे बेटा साथ साथ। एक बार सारे पार्ट्स में कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे उनको डिस्कस कर लेते हैं और किस टॉपिक का कितना वेटेज है उसको भी देख लेते हैं। आते हैं पहले बिजनेस मैथमेटिक्स पे। दिस इज ऑल अबाउट योर सिलेबस। First topic is ratio, proportion, log, indices. This is chapter 1. इसके अंदर ये चारों टॉपिक्स हम कवर करेंगे। इस चैप्टर की आपकी 3 to 4 मार्क्स की वेटेज है। रेशियो से बेसिकली जो क्वेश्चंस पुट अप होंगे दोज आर वर्ड प्रॉब्लम्स काइंड ऑफ। बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम रेशियोस। नेक्स्ट इज इक्वेशंस। इक्वेशंस में जो 3 टाइप के इक्वेशंस हम कवर करेंगे दोज आर लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड क्यूबिक इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस से भी आपका वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन प्रायोरिटी पे रहता है और इस चैप्टर से आपका ऑलमोस्ट 4 मार्क्स का वेटेज है। थर्ड वन इज matrices
एंड डिटर्मिनेंट्स। ये चैप्टर न्यूली एडेड है, सीपीटी के एग्जाम में नहीं था, अभी फाउंडेशन के एग्जाम से ही ऐड ऑन हुआ है। बेसिक 11th-12th का और 3 मार्क्स का इस चैप्टर का आपका वेटेज है, 2 to 3 एग्जैक्टली। कवर अप क्या क्या करेंगे इसमें आप, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, inverse of matrices, value of determinants, Cramer's rule, right? नोट डाउन करें बेटा। Next one is linear inequalities. वन to 2 मार्क्स का वेटेज आएगा चैप्टर से। बहुत सिंपल, बहुत छोटा सा चैप्टर है। Another one is series and sequences. Very important chapter. 5 to 6 मार्क्स का वेटेज है इस चैप्टर का आपका। और सीरीज में जो सीरीज हम स्टडी करेंगे, एपी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, जीपी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, AGP, that is arithmetical geometrical progression. Sixth one is sets, relations and functions. ये भी most important chapter through the point of foundation exam, approximate 6 marks का वेटेज इसका चैप्टर का है आपका। बेसिक सेट्स स्टडी करेंगे और बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स, एडिशन, कार्डिनल नंबर, subtraction, union of sets, intersection of sets.
रिलेशंस और फंक्शंस के अंदर रिलेशंस में आपका जो आएगा दोज आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक and transitive. One more universal relation and equivalence. Then in functions there are one functions, many one, again onto and into functions. जितना फोकस आप लोगों को प्रैक्टिकल पोर्शन पे करना है उतना ही फोकस थ्योरी, फॉर्मूलाज लिस्ट, उनके ऊपर भी उतना ही फोकस जाएगा. यूजुअली स्टार्ट से 10 to 12 मार्क्स का आपका थ्योरी बेस्ड पेपर रहेगा. इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका आएगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस. Permutations and combinations, जिसको आप PNC भी बोलते हैं, right? Permutation means arrangements, combination means selections or to choose. Right? चलिए. Next one is differentiation and integration. PNC से भी आपका 3 to 4 मार्क्स का वेटेज रहेगा. डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से राइटली 4 मार्क्स, 4 to 5 मार्क्स एक्चुअली. बेसिक प्रॉपर्टीज, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज दोनों के, और इंटीग्रेशन में हम क्वेश्चंस जो करेंगे दोज आर ट्रिक्स बेस्ड. यूजुअली पूरे मैथ्स में आप लोगों को बिल्कुल भी स्कैर्ड होने की ज़रूरत नहीं है. काफ़ी सारा मैथ्स आपका ऐसा रहेगा जो हम लोग ट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस लेकर चलेंगे, ट्रिक से बताएंगे. डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के अंदर आपका ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन इंक्लूडेड नहीं है. ट्रिग्नोमेट्री नॉट इंक्लूडेड. ठीक है बेटा. चलिए. The last chapter of business mathematics is, it is 9th one, is time value money, most important chapter of the business mathematics. Or this is also known as compound interest, simple interest.
जिसको आप SI एंड CI भी बोलते हैं। इस चैप्टर से भी आपका 5 मार्क्स का वेटेज आएगा। Move on to logical reasoning, section B, which is logical reasoning. फाइव चैप्टर्स इंक्लूड होंगे, सीरीज जिसमें 2 पैटर्न पे क्वेश्चंस मिलेंगे, मिसिंग टर्म एंड अनदर वन इज ऑड वन आउट और रॉन्ग टर्म आउट। This section is very important as it is very easy. These 20 marks each and every student can carry easily. सीरीज के बाद आपका ब्लड रिलेशन, थर्ड वन इज डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस। हर चैप्टर से 4 मार्क्स का वेटेज है। कोडिंग डिकोडिंग, and one more chapter is sitting arrangement. Right? अब आ जाते हैं सेक्शन सी। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। Chapter 1 is measure of central tendency. यहाँ से जो हम कवर अप करेंगे, मीन, मीडियन एंड मोड। And one more thing is partition values. मीन के अंदर जो हमारे पास पॉइंट्स आएंगे, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, and harmonic mean. और पार्टीशन वैल्यूज के अंदर क्वार्टाइल्स,
deciles and percentiles. ये चैप्टर आपका कवर करेगा 3 to 4 मार्क्स. एक बात और ध्यान रखेंगे आप लोग कि स्टैटिस्टिक्स से आपका जितना प्रैक्टिकल पोर्शन इम्पॉर्टेंट है उससे ज़्यादा थ्योरी का पार्ट इम्पॉर्टेंट है. छोटे छोटे पॉइंट्स को आप लोग हर डेफिनेशन से क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट मिल रहा है उसको साथ साथ नोट डाउन करके चलेंगे. सेकेंड वन इज बेसिक स्टैट्स. इस चैप्टर के अंदर आपके पास सिर्फ थ्योरी से रिलेटेड पार्ट है, थ्योरी रिलेटेड सेक्शन लाइक क्लास इंटरवल्स, width, data, primary और secondary obviously. Class limits, inclusive series and exclusive series. फोर मार्क्स का वेटेज. चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं चैप्टर 3 मेजर ऑफ डिस्पर्जन. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर. चैप्टर के अंदर आप लोग पढ़ेंगे QD, MD, SD and range. QD is quartile deviations, deviations of partitions value, mean deviation, standard deviation, सिक्स मार्क्स का आपका वेटेज. लिखते रहेंगे बेटा साथ साथ कि अभी आप लोगों का स्टडी मटेरियल प्रोवाइडेड नहीं है. कोरिलेशन एंड रिग्रेशन. थ्री टू फोर मार्क्स का वेटेज आएगा आपका. कोरिलेशन में जो आप लोग पढ़ेंगे रैंक कोरिलेशन, और नॉमिनल कोरिलेशन कोफिशिएंट. लाइंस ऑफ रिग्रेशन के अंदर लाइंस ऑफ रिग्रेशन and regression coefficients.
next chapter is index numbers. थ्री मार्क्स का वेटेज आएगा चैप्टर से. इस चैप्टर के अंदर हम 5 तरह के इंडेक्स नंबर्स पढ़ेंगे, राइट? Boolean index number, Paaschi's index number, Laspires, Cayley's index number. और last one is Fisher ideal index number. ठीक है, चलिए. Last chapter is sampling theory. टू 3 मार्क्स का वेटेज आएगा इस चैप्टर का आपका. थ्योरी बेस्ड चैप्टर है कंप्लीटली, नो प्रैक्टिकल पोर्शन. चलिए, ये आपका सारा डिस्क्रिप्शन हो गया सिलेबस का. आज हम शुरू कर लेते हैं बिजनेस मैथमेटिक्स से एक चैप्टर, रेशियोज, चैप्टर 1, जिसके अंदर हमारे पास 4 टॉपिक्स कवर अप होंगे. उसी का फर्स्ट टॉपिक रेशियो. बिजनेस मैथमेटिक्स. साथ साथ लिखते रहेंगे बेटा. सेक्शन ए. Ratio is the comparison between two or more quantities of same kind. Same kind means like terms. Like terms means the terms which have same units. That means आप एज का रेशो एज के साथ फाइंड करोगे, और ऐसा भी नहीं है कि एक का एज ईयर में है दूसरे का मंथ में है तो हम रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं. बोथ द यूनिट्स आर सेम. एक एज अगर ईयर्स में है तो दूसरा भी ईयर्स में होना चाहिए. एक मंथ में है दूसरे को भी आपको मंथ्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो थ्योरी के हैं ये आप लोग ध्यान रख के चलेंगे साथ साथ, क्योंकि जितना प्रैक्टिकल पोर्शन इंपॉर्टेंट है उतना ही थ्योरी का पार्ट भी इंपॉर्टेंट है आपका फाउंडेशन के एग्जाम के लिए. रेशियो इज यूनिट फ्री, so it is also a pure number. Very important point. जितने भी यूनिट फ्री क्वांटिटीज हैं those all are pure numbers. Right? Example,
यूनिट फ्री कैसे कह रहे हैं आप? सपोज करिए मैं ये कह रही हूँ कि आपको फाइंड द रेशियो ऑफ 5 kg to 15 kg, राइट? तो रेशियो इज, ये रेशियो का साइन है, A is to B. दिस इज A upon B. 5 upon 15 kgs, and this is also kgs. kg balanced हुआ, this is 1/3. So there is no unit ना, kg is balanced with kg. That's why ratios are known as pure numbers. Now move on to representation of ratio. It is denoted by A is to B, which is equal to A upon B. These are known as quantities of ratios. The upper one is numerator, also known as antecedent, and the lower one is denominator or consequent. लिख रहे हैं बच्चे? Ratio. Duplicate ratio. If A is to B is a given ratio, then its duplicate is A square is to B square. दोनों क्वांटिटी स्क्वायर हो जाएंगे डुप्लीकेट रेशियो के लिए. एक एग्जांपल ले लेते हैं. If 2:5 is a given ratio, then find its duplicate ratio. This is 2 का square ratio 5 का square, 4:20. ये आपका duplicate ratio है. ठीक है? Next is point number 2, triplicate ratio. बस आज सेकेंड पॉइंट तक ही करेंगे. ट्रिप्लिकेट
ratio. If A is to B is a given ratio, then its triplicate ratio is दोनों क्वांटिटीज क्यूब हो जाएंगे. ठीक है, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं. If A is to B is equal to 1:3, then find its triplicate ratio. आप क्या करेंगे, 1 का क्यूब, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, दोनों क्वांटिटीज क्यूब करना है. 1 का क्यूब रेशियो 3 का क्यूब. दिस इज 1 रेशियो 27 और यही आंसर है आपका. ठीक है, चलो होपफुली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. बट इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम you can contact me personally, call me any doubt. There is no problem, anytime I'm always there with you, right? चलिए बाकी कल करते हैं. इसको एक बार रीड करेंगे, जो 2 फॉर्मूले आज हम लोगों ने किए. ठीक है, चलिए टेक केयर, बाय बाय.